Studying the important topics of the medicine. First is ABCD2 criteria. ABCD2 criteria is linked with the transient ischemic attack and it predicts the risk of further stroke episodes in an individual. ABCD. A stands for age more than 60, B stands for systolic BP more than 140 and diastolic BP more than 90 mmHg. Then is C stands for clinical features. In clinical features, we have the two parameters, that is, one is speech abnormality, speech impairment, and second is unilateral weakness. Unilateral weakness will be amounting to 2 points. Then from the D we have the duration and the diabetes. Duration, if 10 to 59 minutes, then it is 1 point, and if it is more than 60 minutes, then it accounts for 2 points. Then another D is for diabetes. So 2 points are assigned to two parameters, that is unilateral weakness and duration more than 60 minutes. Then next we have the scoring systems for the dyspnea. Dyspnea scoring system are of two types, NYHA, New York Heart Association, and MMRC. MMRC is Medical Research Council Dyspnea Scale. New York Heart Association grading. It is on the basis of physical activity. It is starting from 1, grade 1, 2, 3, 4. 1 is asymptomatic on physical activity, then 2 is slight limitation on physical activity, 3 is marked limitation. 2 is slight limitation, 3 is marked limitation on daily activity, and 4 is symptoms at the rest. First is asymptomatic, then second is slight limitation, then third is marked limitation, and fourth is symptoms at the rest. Asymptomatic, फिर 1 वाला एसिम्टोमेटिक था, 4 वाला क्या है, 4 वाला रेस्ट पे भी सिम्टोमेटिक है, और बीच वाले में क्या आएगा, स्लाइट लिमिटेशन और मार्क लिमिटेशन. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द MMRC ग्रेडिंग. MMRC ग्रेडिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेड 0 एंड ग्रेड 0 इज breathless on strenuous exercise. Then grade 1 is hurrying or walking up a slight hill, breathless when hurrying or walking up a slight hill. Then grade 2, imagine he was walking with two people and he has to stop in between to take a breath, or is walking slower than them. Then it is grade 2, and in grade 3 he is not able to walk 100 meters, or he is breathless after 100 meters or few steps. And grade 4 is breathless to leave the house, or dressing or undressing is also difficult for him. सो ग्रेड 0 मीन्स सिर्फ स्ट्रीनस एक्सरसाइज पे हो रहा है. ग्रेड 1 क्या है, जब वो हिल पे चढ़ रहा है या तेज़ी से दौड़ रहा है तभी वो ब्रेथलेस हो रहा है. और ग्रेड 2 पे क्या है, 2 बंदों के साथ चल रहा था, उनसे स्लो चलना पड़ रहा है उसको, या रुकना पड़ रहा है ब्रेथ लेने के लिए. फिर ग्रेड 3 में क्या है, ग्रेड 3 में मतलब 100 मीटर्स पे ही चल रहा है, वो 100 मीटर्स भी नहीं चल पाता, या फिर मतलब थोड़े मिनट बाद ही थक जाता है. और ग्रेड 4 में क्या है, रेस्ट वाली एक्टिविटीज़ आ गई, जैसे अनड्रेसिंग, ड्रेसिंग तो बंदा रेस्ट पे ही कर सकता है, मतलब उसके लिए तो चलने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी वो क्या हो रहा है, सिम्टमेटिक हो रहा है. ठीक है. दैट्स आर द डिस्निया ग्रेडिंग्स. देन वी हैव द कर्ब 65 स्कोर. कर्ब 65 स्कोर, it curve 65 score. C is for confusion, then U is for urea more than 7 millimole per liter, R is for respiratory rate more than 30, then B is for BP, systolic BP less than 90 and diastolic BP less than 60, and 65 is for age more than 65, and each is given 1 point. Confusion, urea more than 7 millimole per liter, respiratory rate more than 30, then systolic BP less than 90, diastolic BP less than 60, age more than 65. And if score is 0 to 1, then home treatment. In 2 we consider the admission, and in 3 to 5 we can consider the admission in 2, but in 3 to 5 we surely need to admit. Okay, curve 65 score. Then next is diagnostic criteria for GBS, Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome basically myelination linked disease होता है, and it is basically linked with the spinal cord symptoms like. So we need to learn the required, that is
मेजर क्राइटेरिया क्या है इसमें? प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ 2 और मोर लिम्स ड्यू टू न्यूरोपैथी, 2 या 2 से ज़्यादा लिम्स की वीकनेस हो रही है और लिम्स इन्वॉल्व होते हैं रिफ्लेक्सेस में, तो ए रिफ्लेक्सिया हो रहा है। और ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? लेस देन 4 वीक्स, ड्यूरेशन लेस देन 4 वीक्स। एंड एक्सक्लूजन ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग दीज सिम्टम्स लाइक वैस्कुलाइटिस, टॉक्सिन्स, बॉटुलिज्म, डिप्थीरिया, पोरफायरिया, localized spinal cord or cauda equina syndrome. Okay, then we have the muscle response. Muscle response or muscle power is graded and scoring is provided. 0 is no movement, 1 is flicker of movement, 2 is movement with the gravity eliminated, then 3 is movement against the gravity but not against the resistance, 4 is movement against the resistance and 5 is normal power. 0 पे क्या है? नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही। फिर 1 पे क्या है? फ्लिकर ऑफ मूवमेंट हम ऑब्जर्व करेंगे मसल में, ठीक है। फिर 2 में क्या है? 2 में हम ग्रेविटी एलिमिनेटेड, मतलब बोथ दी थिंग्स आर एलिमिनेटेड, ग्रेविटी भी एलिमिनेट है और रेजिस्टेंस भी एलिमिनेटेड है, तो उसमें मूवमेंट हो रही है, तो दैट इज ग्रेड स्कोरिंग 2। देन स्कोर 3 इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, score 3 is against the gravity, score 4 is against the resistance and 5 is normal power. Then we have the gold staging for COPD. Gold 0 is spirometry is normal, then gold 1, that is mild COPD. Mild COPD is FEV1 by FVC is less than 0.7 and FEV1 is more than 80%. FEV1 is more than 80%. Then grade 2 is FEV1 is 50 to 80%. Then grade 3 is 30 to 50% and grade 4 is less than 30%. तो हम कैसे याद करेंगे? ग्रेड 1 में क्या है? 80% से ज़्यादा। फिर ग्रेड 2 में क्या है? 50 to 80, ग्रेड 2 में 50 to 80। देन ग्रेड 3 में क्या है? 30 to 50, ग्रेड 3 में 30 to 50। देन ग्रेड 4 इज़ लेस देन 30, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। 30, 50, 80, 30, 30 + 20, 50, 50 + 30, 80 एंड 80 + 20, 100। मीन्स पहले 30 का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस है और फिर 30 का और फिर 20 ऐड करनी है, ठीक है।